हेलो हेलो, कैसे हो तुम सभी। मैं ऋषवराज यहाँ पे एक नए टॉपिक के साथ। इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे हाउ टू कंप्लीट क्लास 9th मैथ्स इन जस्ट 5 डेज। क्या हम भी औरों की तरह मैथ्स में 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं? क्या हमारा हमेशा का 100 मार्क्स स्कोर करने का सपना पूरा होगा? तो चलिए आपकी दुविधाओं को खत्म करने के लिए वीडियो शुरू करते हैं। So we are going to complete the whole syllabus of maths in just only 5 days. But the question is, how is it to be possible? These are the 5 tips and tricks by using which you can get 100 marks in your subject. So the first tip is the book you read. So basically most of the people are confused to choose the best book for them. Like they have to study some extra books like R.D. Sharma, R.S. Agrawal or NCERT Exampler. Now it doesn't mean to say that तुम्हें मैथ्स NCERT बुक के अलावा कोई बुक नहीं पढ़ना चाहिए. If you are studying sufficient question from other book, then that's great. Also there are varieties of books that are available in the market like R.D. Sharma, R.S. Agrawal and NCERT Exampler. But from these extra books you need to cover only the first and second chapter, because in your NCERT book there are not a sufficient question as compared to other books. Now the second tip is what you study. So what you study means to say that क्या तुम्हें वेटेज पता है सारे चैप्टर्स का. Just like you are going to see the questions of 8 marks from number system, 17 marks of algebra, 4 marks of quadrant geometry, 28 marks and the whole greater geometry, 28 marks in it, and 13 marks from mensuration, and last 10 marks from statistics and probability. Although chapter doesn't matter, but the weightage matters, because after knowing the weightage you can get the idea which chapter to finish first. Just like I am weak in algebra, so I will do the questions of algebra first. Now the third tip is how you study. So in your class you may be seen as sometimes your mates or friends got good marks as compared to your marks. Have you thought ever that why it happens? So it happens due to the two reasons. First, I have told earlier that how you study, and second is key consistency that I will make you understand later on. So if you want to check your ability, so point out that chapters which you think or feels harder to do, because in mathematics you need to do harder one first. Although this will help you to know that how you study. Now the next or fourth tip is key consistency. So it is mean to say that तुम अपने पढ़ाई के प्रति कितना सिंसियर हो. अगर तुम्हारे एग्जाम पास है तो ऑब्वियसली तुम लोग कुछ ना कुछ तो गोल बनाई हो कि हर ना एक दिन की आज मैं ये चैप्टर करूंगा, कल मैं वो चैप्टर करूंगा. तो क्या तुम उस चैप्टर को कंप्लीट कर पा रहे हो? अब ऐसा मत बोलना कि तुम्हारे पास कोई गोल ही नहीं है. अगर गोल सच में नहीं है तो तुम उसको बनाओ. तो की ऑफ कंसिस्टेंसी का एक ही रूल है, डोंट फील डिमोटिवेटेड. तो 90% लोगों का एक ही हाल है, और वो आदत बहुत ही ख़राब है कि वो लोग पहले से ही खुद को जज करने लग जाते हैं कि मैं इतना % नंबर लाऊंगा, इतना ख़राब मेरा रिजल्ट आएगा. तुम्हारे पास तो अभी टाइम है, तुम मैथ्स करके तो देखो. तुम्हें जो मैंने 3 टिप पहले दे रखा है उसे तुम पहले फॉलो करके देखो, उसका की कंसिस्टेंसी तुम्हें खुद मिल जाएगी. अब जैसे तुम चाहो तो तुम कोई टॉपिक खत्म करते हो तो उसके बाद तुम कोई सैम्पल पेपर्स कंप्लीट कर सकते हो, जिसके बाद तुम्हारा मोटिवेशन काफ़ी ऊपर तक हाई रहेगा, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट तुम पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे और लास्ट में तुम डिमोटिवेटेड हो जाओगे. और अगर तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड सैम्पल क्वेश्चन चाहिए तो मेरे टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से तुम जाके ले सकते हो. नाउ द फिफ्थ एंड लास्ट टिप इज व्हाट यू डिड. सो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू आस्क योरसेल्फ दैट तुमने क्या किया. इससे तुम्हें आइडिया लगेगा कि तुम जो गोल सेट कर रहे हो वो गोल कंप्लीट कर पा रहे हो या फिर नहीं. और अगर तुम्हारे गोल्स पूरे हो जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, बट नहीं हो रहे तो तुम्हें बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी आगे चल के, बिकॉज तुमने एग्जाम के टाइम पे जो खुद से वादा किया है उसको निभाना भी बहुत जरूरी हो जाता है इन ऑर्डर टू गेट अ गुड मार्क्स. So these are the 5 tips that you should also have to know before your examination. So simply take a rough notebook and do all the questions that are given in the chapter 1 and 2 from other books. Like I'm taking example of R.S. Agrawal. So the important question of chapter 1 that you need to do from R.S. Agrawal book are the exercise 1F and 1G. In that exercise there are most important questions for you according to your examination. So from these two exercises, the important questions that were repeated so many times are from R.S. Agrawal book. The question number 9, 15, 17, 21 and also 20, and the last one is 24. These important questions are from exercise 1F and these are very important. Also, if we talk about the polynomials chapter, all you can say algebra, then there are the questions from exercise 2D from 19 to 26 are most important, and you are going to see the heavier weightage number from this exercise. After all, we have mensuration part in which the area of a triangle using Heron's formula is important, but the most important is surface area and volume, in which you are going to see the questions from the cone part only. So these were the most important topics and questions that you need to follow in your daily routine. So bye bye and all the best for your exam.